Welcome everyone. So just like yesterday I told, today we are going to learn about the HCF and LCM. I know that HCF and LCM about these basic concepts we were learning from the 5th standard or 6th standard. But these concepts are directly useful in the 10th standard's first topic also. So that's why we will revise or we will learn again these things. And some students told me that we have to learn in Hindi and English also. So both languages I will use today. So we know that everyone knows about the HCF and LCM. So first, as we are learning from the basic things, so we'll first know their full forms. So you can see here HCF. So full form of HCF is highest common factor. Highest common factor is the full form of the HCF. HCF is also called as GCF in some textbooks or in some reference books. At the place of HCF, they are using the word GCF. So, what is the meaning of GCF? GCF means greatest common factor. Similarly, not only two, but another और भी एक name है HCF का means another short form or full form we can say. So वो क्या है? वो है GCD. And after 10th standard, I think most of the places you will use this word, that is GCD. So GCD का full form क्या होता है? Greatest common divisor. सो इनके नाम भले अलग हो लेकिन मीनिंग सेम ही है. दैट इज द HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. So we know that highest and greatest, these are nothing but the similar words. So common word is common in all these three things. In the first two we are using the word factor. In the third one we are using the word divisor. So factor or divisor both can be taken as a similar things here. सो इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, HCF आ जाए, GCF आ जाए या GCD आ जाए, हमें एक ही मतलब समझना है. दैट इज द वी हैव टू फाइंड HCF. सो आफ्टर HCF नेक्स्ट वन इज द LCM. LCM बेचारा अकेला ही है, इसका कोई दूसरा फॉर्म वगैरह नहीं है. But in some books they are using, for the lower classes they are using the LCM means lowest common multiple. Lowest common multiple. But as you are coming in the 10th standard or after 10th standard also, we are using the word at the place of lowest, we are using it similar word, that is least common multiple. So these are the basic full forms of these two things that we were learning from the 5th standard or 4th standard also. So HCF, it is also called as GCF, or it is also called as GCD. And LCM means lowest common multiple or least common multiple. So just like yesterday also or in the previous video, we learned about the most important things we need to know to learn about the HCF and LCM, that is the factor and multiple. So first we will learn about these things, that is the factor and multiple. So let's learn about these things. So what is the meaning of factor actually? So factors are numbers we can multiply together to get another number. So factor का मतलब क्या होता है? If you will take these numbers together, और अगर उन numbers को आपने multiply कर दिया, then you are getting one another number. So जो नया number मिलता है तुम्हें, वो बाकी के नंबर उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस टू one example. So here you can see we are multiplying 2 and 3. 2 multiplied by 3. We know that the product is coming 2 3s are 6. So what we can say here, 2 and 3 are the factors of 6.
2 and 3 are the factors of 6. So here also you can see we have written factor. Here also we have written factor. So in this way we can learn how we can find the factors of the numbers. We will see some examples also, so we will understand better. But one thing that you have to remember whenever you are going to find the factors, कि सारे नंबर सिस्टम में एक अकेला ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है, जो सबका फैक्टर होता है, एंड दैट फैक्टर इज 1. दैट फैक्टर इज 1. सो वी नीड टू रिमेंबर दैट कि 1 जो नंबर है जिससे हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, इट इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. और ये अकेला ही नंबर, इट इज यूनिक, जो हर किसी नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है. So some example I have written here, we will find the factors, but the numbers will be the smaller number or bigger number. अगर तुम्हें सारे factors ढूंढने हैं उसके, so how can we find the factors, that we will learn here. So first example we have taken 12 here. So first I am writing 12 is equal to. So whenever you are going to find the factors, all factors of the given number, तुम्हें पहले क्या करना है, पहले उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 multiplied by 12. वी नो दैट एक जो नंबर होता है वो सबका फैक्टर होता है. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिल गए. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कोई भी नंबर हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, वो एनी रियल नंबर, उसके कम से कम 2 फैक्टर होते ही है. ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज द 1. तो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर द नंबर इटसेल्फ. ये दोनों परमानेंट फैक्टर होते हैं. और हम क्या कर सकते हैं, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 आता है. सो 2 से 12 को डिवीजन जाती है क्या, द थिंग दैट वी लर्नड इन द लास्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो, डिविजिबिलिटी टेस्ट. सो इसका यूनिट प्लेस 2 है, सो 2 से भी डिवीजन जाती है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6. 3 से जाती है क्या, 3 से भी जाती है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4. नाउ 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है, बट 4 ऑलरेडी वी हैव टेकन, सो द फैक्टर्स आर एंडेड हियर. सो विच आर द फैक्टर्स ऑफ 12. So we can write here factors of 12 is equal to, पहले तो परमानेंट नंबर दैट इज 1, उसके बाद वी आर राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. सो सेकंड में आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 12 itself. So in this way we can find the factors of the given number. All factors we can find in this way. So another example we have taken here, that is the 25. It is also by similar way we are doing this. So similar we are writing first 25 is equal to, पहले परमानेंट नंबर कौन सा होता है, 1. 1 मल्टीप्लाइड बाय 25. अब देखना है कि 2 से डिवीजन जाती है क्या 25 को. वी नो दैट 2 के टेस्ट में क्या होता है, यूनिट प्लेस में हमें इवन डिजिट चाहिए. इवन है क्या, नहीं है, बिकॉज 5 इज ऑड नंबर. सो 3 से जाती है क्या, 5 प्लस 2 7. 7 तो 3 के टेबल में नहीं है, सो 3 से भी नहीं जाएगी. 4 से, 4 के टेबल में 25 नहीं आता है. 5 से, इट इज एंडिंग विथ 5, सो इट इज डिवाइजिबल बाय 5. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. 5 के बाद नंबर कौन सा था, 6, बट ऑलरेडी 5 आ चुका है यहाँ पे, तो इसके फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो गए, खत्म हो गए. सो फैक्टर्स ऑफ 25 is equal to 1, 5 or and 25. So these are the factors of 25. So in this way we can find all the factors of the given number. कितने भी factors हो, we can find by this method. So I hope you understood what is the meaning of factor generally. Factor का मतलब क्या होता है, in simple language if you want to explain, कि किसी भी numbers के अगर तुमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, so हर एक छोटे टुकड़े को हम factor बोलते हैं. क्या बोलते हैं, factor. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक पिज्जा ले लिया और पिज्जा को कट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा है, कंसिडर करो, और पिज्जा के हमने सपोज इक्वल टुकड़े नहीं बनाए, एक टुकड़ा मैंने इतने साइज का बनाया और दूसरा टुकड़ा मैंने इतने साइज का बनाया, तीसरा टुकड़ा मैंने इतने साइज का बना दिया. सो ये 1 नंबर का टुकड़ा, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का. सो अगर इस पिज्जा को हमने एक नंबर समझा, सो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये पहला टुकड़ा पहला फैक्टर, दूसरा टुकड़ा दूसरा फैक्टर, ये तीसरा टुकड़ा तीसरा फैक्टर और चौथा टुकड़ा चौथा फैक्टर.
जैसे इस पिज्जा के हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाए, वैसे नंबर्स के जब अगर हमने टुकड़े बना दिए तो उस हर टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं. दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ द फैक्टर्स. Now, after factors, next concept that we need to learn to understand the method of LCM, how to find the LCM, that is the multiple. So, what is the meaning of multiple? First, that thing we will understand. So, we get a multiple of a number when we multiply it by another number. एक नंबर ले लिया तुमने और उस नंबर को एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू आर गेटिंग सम प्रोडक्ट. So that product is called as the multiple of given number. For example, generally 1 is the least natural number, so we are starting the multiplication by 1. अगर उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें पहला मल्टीपल मिलेगा, 2 से कर दिया दूसरा मल्टीपल, 3 से तीसरा, 4 से चौथा, 5 से पांचवा मल्टीपल. But one condition is there, you can't multiply that number by 0. Why we can't multiply it by 0? Because 0 की एक property है, we can say that property of 0 also. Because if you multiply any number by 0, you are getting the answer 0, you are not getting the next number. So that's why we can't multiply by 0. So here we have written this, but not 0. So it is just like the multiplication table. Multiplication table we are learning from the first standard. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6. So 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6. These are the multiples of 2. So it is nothing but the multiplication table. Multiple का मतलब simply जो table में numbers आते हैं उनको हम multiple बोलते हैं. For example, the multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20. So here you can see we have written the table of 4. But जब हम टेबल के बारे में बोलते हैं, टेबल हम 10 तक ही काउंट करते हैं, दैट इज 14 are 40. बट मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं. क्या होते हैं? इनफाइनाइट. तुम कोई भी नंबर लोगे तो उसके कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं. बिकॉज नंबर्स आर इनफाइनाइट, we don't know which is the last number, so that's why multiples will be also infinite. आफ्टर यहाँ पे 5 का एग्जाम्पल दिया है, सेम यहाँ पे 4 का टेबल लिखा है, यहाँ पे 5 का टेबल लिखा है. सो दीज आर कॉल्ड एज द मल्टीपल्स. मल्टीपल मतलब सिर्फ हमें टेबल गिनना है, बट टेबल गिनते वक्त हम जब टेबल ड्रॉ करते हैं वो टेबल 10 तक एंड हो जाता है, बट यहाँ पे हर बार वो 10 तक एंड होगा या नहीं, वी डोंट नो. So these are the basic concepts about the factors and multiples. So I hope you understood about the what is the meaning of factor and what is the meaning of multiple. So we can go to solve some questions based on the HCF and LCM. So in 10th standard also they have given the method. We will follow the same method so the students will not confuse. It is simple. Generally we are doing the prime factorization. So to find the HCF and LCM, the method that we are using is called as prime factorization. Prime factorization. Not only in this year, but ये जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, हम 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड से यूज कर रहे हैं. उसको थोड़ी सी रिवीजन 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने दी है. सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी मच इजी, but only we have to understand the, what can we say, best way to understand these concepts. So let's learn about the how to find the HCF of these numbers. We are starting from the simple numbers. So we have taken the first example 8 and 12. So हमें पहले क्या करना है, 8 के फैक्टर्स निकालने हैं और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं? जनरली इन वर्टिकल मेथड वी आर डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय दिस वे. सो पहले क्या करते हैं, 8 को द लीस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, 2 से डिवीजन जाती है क्या? सो 2 इज हियर, 2 4s are 8, another 2, 2 2s are, another 2, 2 1s are 8. So then we are writing here 8 is equal to 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3. So it is 2 cube, 2 cube. Similar we will do for 12 also. I am writing here for the 12. We know that 12 is also divisible by 2. So by 2, 2 6 are 12, 2 3s are 6. Now we know that 3 is a prime number. So 3 को दो ही नंबर से डिवीजन जाती है, एक तो 1 से या खुद से. सो लास्ट में हमें क्या लाना है? राइट साइड में 1 लाना है. सो 3 1s are 3. सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार. दैट्स व्हाई 2 स्क्वायर multiplied by
3 कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार। जनरली हम किसी भी नंबर की पावर जब एक होती है और 1 होती है वो नहीं लिखते, बट इफ यू वांट टू राइट जस्ट लाइक 3 raised to 1, इट्स फाइन, इट इज नथिंग रॉन्ग इज देयर। ओके, सो हमने 8 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। सो हमें अब क्या ढूंढना है? उनका HCF एंड LCM ढूंढना है। सो पहले हम निकालेंगे HCF इज इक्वल टू, सो HCF क्या होता है? ये जो फैक्टर्स सारे तुम्हें यहाँ पे मिले उनमें से क्या करना है तुम्हें? जो सबसे छोटी पावर वाला फैक्टर है, सबसे छोटी पावर वाला फैक्टर, वो फैक्टर तुम्हारा क्या होगा? HCF होगा। बट वन कंडीशन इज देयर, वो फैक्टर दोनों भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। तो पहले देखो कि कौन सा फैक्टर दोनों के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में है। यहाँ पे 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आता है और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आता है, 3 भी आता है। सो कौन सा नंबर है जो दोनों जगह प्रेजेंट है? सो 2 ही प्रेजेंट है, बिकॉज 3 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। सो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 3। सो छोटी पावर कौन सी है? 3 और 2 में 2। सो वी आर राइटिंग HCF इज इक्वल टू 2 स्क्वायर and square of 2 is 4. So 4 is the HCF or GCD or GCF of 8 and 12. So HCF निकाल दिया, अब क्या करेंगे? हम LCM निकालेंगे। सो एलसीएम के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों जगह वो टर्म होनी चाहिए, एक जगह होगी तो भी चलेगी। सो एलसीएम में हम क्या करते हैं? जो उनकी हाईएस्ट पावर्स होती है वो हम एलसीएम में लेते हैं। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? लोएस्ट पावर्स, और एलसीएम में हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर्स। सो हियर एलसीएम, यहाँ पे देखो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 क्यूब, तो हमने यहाँ पे ले ली, मल्टीप्लाइड बाय, अब 3 है। एलसीएम में एक जगह होगा नंबर तो भी चलेगा, इट्स फाइन। सो 3 की हाईएस्ट पावर एक ही है, सो 3 raised to 1 वी कैन टेक हियर। सो वी नो दैट 2 क्यूब, 2 क्यूब का मतलब क्या होता है? 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 का 3 की एक पावर मीन्स ओनली 3, so is equal to 20. This is the LCM of these two numbers. So in this way we can find the HCF and LCM of the given numbers, and this method is called as the prime factorization method. So similar, another one example we can check here, that is the 15 and 20. So we are starting the prime factorization for 15 first. So we know that 15 is not divisible by 2, so we are starting by 3. 3 5s are 15. Now 5 is a prime number, so we have to divide by 5 only. 5 1s are 5. सो 15 के फैक्टर्स कौन से हो गए? 15 इज इक्वल टू, या 3 भी और 5 भी एक ही बार रिपीट हुआ है, सो 3 इंटू 5। सिमिलर वी विल डू फॉर द 20 also. So here I am writing for the 20. 20 is divisible by 2. 2 tens are 20. Another 2 5s are 10. Now 5 is the prime, so 5 1s are 5. सो 20 के फैक्टर्स कौन से हो गए? इज इक्वल टू, यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ है, सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, एक ही बार हुआ है तो एक ही बार लिखते हैं। अब हमें क्या निकालना है? इनका HCF एंड LCM। HCF इज इक्वल टू, यहाँ पे HCF हमने क्या बोला था? जहां जहां वो नंबर दोनों जगह होने चाहिए। सो यहाँ पे दोनों जगह कौन से नंबर है? यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। सो दोनों जगह होने वाला नंबर कौन सा है? यहाँ पे 5 5। सो 5 की लोएस्ट पावर एक ही है, अकेला है बेचारा, सो 5 raised to 1, दैट इज 5। सो 15 और 20 का HCF क्या होगा? 5। नाउ LCM इज इक्वल टू, एलसीएम का मतलब क्या है? जो सारे फैक्टर्स वहां पे मौजूद है उनकी हाईएस्ट पावर। सो पहले सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? 2 है, 2 के हाईएस्ट पावर क्या है? 2, सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड। 2 से बड़ा फैक्टर 3, 3 के हाईएस्ट पावर है 1, सो 3 एज इट इज। और उसके बाद वाला फैक्टर 5, और 5 की पावर है 1, सो 2 की पावर 2 4 multiplied by 3 multiplied by 5 is equal to 4 3s are 12, 12 5s are 60. So 60 is the LCM of the given number, that is the 15 and 20. So in this way we can find the HCF and LCM of the numbers. यहाँ पे हमने जो examples देखे उनमें दो ही numbers दिए गए। हम
अब ऐसे एग्जांपल देखेंगे कि जिनमें दो से ज्यादा नंबर्स होंगे, मतलब कितने नंबर्स होंगे, तीन नंबर्स होंगे. So we'll see these examples also. So here you can see these examples we are taking here. So 120, 180, 240. Same method we have to use. We are not changing the method. So first क्या करेंगे हम, 120 का फैक्टर्स करेंगे, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. So first I am writing here 120. It is divisible by 2. So 260 आएगा यहाँ पे. उसके बाद अनदर 230 आएगा यहाँ पे. उसके बाद अनदर 215 आएगा यहाँ पे. नाउ 15 को 2 से डिवीजन नहीं जाती है, सो किससे जाती है, 3 से जाती है. 3 5 are 15. उसके बाद 5 इज अ प्राइम नंबर, सो 5 1s are. जब जब प्राइम नंबर आएगा तुम्हारा फैक्टराइजेशन प्रोसेस खत्म होगा वहां पे. ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 120 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3. सो 2 की पावर क्या होगी, 3. 3 कितनी बार आया, एक. और 5 एक बार. ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 120 का. तो सिमिलर वी विल डू फॉर 180 also. 180, same 290 will come, 245 will come. Now 45 is not divisible by 2, so next number 315 will come. Next another 5 will come. Next 5 is a prime number, so 5 directly, 1 will come. सो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, लास्ट तक हमें राइट साइड में जब तक 1 नंबर नहीं आता तब तक हमें उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. सो हियर वी कैन राइट 180 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार. 5 कितनी बार, 1 बार. तो सिमिलर फॉर 240, अगेन 2, 120 will come, another 260 will come, another 230 will come, again 215 will come. Again, now it is not divisible by 2, so next number 3. 3 5s are another, 5 1s are. So therefore 240 is equal to, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, 2 raised to 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार, 1. और 5 कितनी बार, 1. सो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे. पहले क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ. एचसीएफ क्या बोला था मैंने, वो जो नंबर है वो तीनों के फैक्टर्स में होना चाहिए. देखो 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है. सो 2 की लोएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. 3 की लोएस्ट पावर कौन सी है, 1. सो 3 ले लिया. 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लोएस्ट पावर 5. सो इससे क्या हो गया उनका, 2 का स्क्वायर आता है 4 multiplied by 3 multiplied by 5 is equal to 4 3s are 12, 12 5s are 60. So 60 is the HCF of the given numbers. Similarly हम LCM भी फाइंड करेंगे. इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या बोला है हमें, हाईएस्ट पावर्स लेनी है और सारे फैक्टर्स की लेनी है. सो सबसे छोटा फैक्टर्स कौन सा है, 2 है. 2 के हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बाद 3, 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 के हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5. सो 2 रेज टू 4 कितना है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर आता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो नंबर्स देखो, 16 nines are 144, 144 multiplied by 5. Here we will do the rough work. 144 multiplied by 5. 5 fours are 20. 2 is for carry over. 5 fours are 20 plus 2, 22. 2 is for carry over. 5 ones are 5 plus 2, 7. 720 will be the LCM of the given numbers.
So in this way, we can find the HCF and LCM of the given numbers. और एक बार बताता हूँ कि HCF ढूंढते वक्त हमें क्या करना है. जो फैक्टर्स होंगे, जो भी फैक्टर्स तुम ले रहे हो HCF ढूंढते वक्त, वो फैक्टर सभी नंबर के फैक्टर्स में होने चाहिए, सभी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में होने चाहिए. बट एलसीएम जब जब निकाल रहे उस वक्त वो कहीं भी एक जगह हो तो भी चलेगा. बट एचसीएफ के लिए हम क्या लेते हैं, उस नंबर की लोएस्ट पावर लेते हैं. और एलसीएम के लिए क्या लेते हैं, उस नंबर की हाईएस्ट पावर लेते हैं. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. सो अनदर एग्जांपल आई हैव गिवन हियर. यू कैन check this example for the practice, and after solving the answer you can comment the answer of this question. I will give the correct answer of this question to your comment. So this is for your homework. So you have to find HCF and LCM of this number and comment your answer in the comment. So solve these questions yourself, so then only you will understand these things. अब तक हमने क्या कर लिए? Only numerical examples we have taken. Now we will go for the word question. So in word question, some what can you say? Some words are there. By reading these words, we can understand which thing we have to find, HCF or LCM. But sometimes they are confusing you. So one basic example we are taking here. Many more examples also we will take for the 10th standard. Don't worry about this. So here one example is given. A teacher has 144 pencils, so 180 erasers and 216 sharpeners. She wants to distribute them equally among students so that each student gets the same number of items. This word is very important whenever the question from the HCF and LCM is coming. Each student has to get the equal number of or same number of items. So what we have to find here, what is the maximum number of students? So ज्यादा से ज्यादा कितने students हो सकते हैं वहां पे, ये हमें ढूंढना है. तो हमारे स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने भी बार बार क्या बताया होता है, वेन एवर मैक्सिमम वर्ड इज देयर व्हाट वी हैव टू फाइंड एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ में भी हाईएस्ट वर्ड आता है. बट इस टाइम के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन था, उसमें मैक्सिमम वर्ड था लेकिन हमें मिनिमम वर्ड था, लेकिन हमें एचसीएफ ढूंढना था. सो टेक केयर व्हाइल राइटिंग दिस क्वेश्चन. सो हमें ध्यान में कैसे रखना है ऐसे क्वेश्चंस. यहाँ पे बिगर क्वांटिटी हमें दी गई है और उनके हमें क्या करना है, बंटवारा करना है इक्वल क्वांटिटी में. सो जब जब तुम्हें बंटवारा करना होता है, यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ. पिज्जा का एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था. जब जब तुम किसी भी चीज के टुकड़े करने वाले हो तो तुम उसके फैक्टर्स निकालने वाले हो, और जब जब तुम फैक्टर्स निकालने वाले हो तो एचसीएफ में आता है. ये मीन्स फैक्टर. एलसीएम में क्या होता है, मल्टीपल होता है. एलसीएम हमेशा दिए गए नंबर से बड़ा होता है, एंड जो एचसीएफ होता है वो दिए गए नंबर से छोटा होता है. ओनली रिमेंबर दिस थिंग, देन यू विल नॉट कंफ्यूज, आई विल गिव यू गारंटी. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ ढूंढना है. उतने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद द 144. सिमिलर मेथड, वी आर नॉट चेंजिंग द मेथड. So by 2, we know that 2 sevens are 14, 2 twos are 4. Another 236 already we know. Another 2, 18 will come. Another 2, 9 will come. Now 9 is not divisible by 2. Next number 3, 3s are 9. 3 is a prime number. So last में क्या आएगा अपना, 1 आएगा. सो इसका हमें फैक्टराइजेशन लिखना है. 144 इज इक्वल टू, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4. सो 2 raised to 4. 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2. सो 3 square. So this is the prime factorization of 144. Next number is 180. So by 2, 90 will come. By 2, 45 will come. Now 45 is not divisible by 2. Next number 3, 15 will come. Again 3, 5 will come. Again 5, 1 will come. एक बार एक पे आ गए तो रुकना है वहां पे. सो 180 इज इक्वल टू, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार. 3 2 बार. 5 एक बार. So similar factorization process for next number 216. Another by 2. So what will come, 108.
2 से डिवाइड करने के बाद, अनदर 54, अनदर 27। नाउ 2 का काम हो गया, 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार। सो 216 इज इक्वल टू, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है देखो, 1 2 3, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार, 1 2 3, दोनों एक साथ आया इस बार। अब क्या निकालेंगे हम इसका HCF, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स में उस दी गई चीजों का बंटवारा हो सकता है। सो वी आर राइटिंग HCF इज इक्वल टू, सो पहले ही बताया था दिस इज अ रिवीजन क्वेश्चन, सो वी विल सॉल्व दिस। सो HCF पे हमें क्या ढूंढना है, ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो तीनों के फैक्टर्स में, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में होनी चाहिए। सो पहले 2 की तरफ जाते हैं, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमें क्या ढूंढना है, उसकी लोएस्ट पावर कहाँ पे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लोएस्ट कौन सी होगी, 2। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। उसके बाद 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो 3 की लोएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लोएस्ट क्या होगी, 2। सो 3 स्क्वायर। अब देखो 5 जो है अकेला, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। सो हम 5 ले सकते हैं, नो। HCF जब जब हम निकालेंगे, वो फैक्टर तीनों भी नंबर्स में होना चाहिए, अदरवाइज वी कांट टेक दैट नंबर। सो हियर 2 की पावर 2 आ गया 4, 3 की पावर 2 आ गया 9। सो 9 का उधर कितना आता है, 36। सो 36 हमारा क्या हो गया, HCF। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ students will be 36. So this is generally first word problem we are solving. So directly I have written the answer. Whenever we are going to solve the questions for the preparation of board examination, I will tell you कि answer कैसे लिखा जाता है. So generally 3 things are there. First, we are writing the given things from the question. Second thing, we are writing the another thing, that is which can we say, solution. और लास्ट में तुम्हारा होता है कंक्लूजन, लास्ट में होता है कंक्लूजन। सो गिवन का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हम जब लिखते हैं तो उसको गिवन बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब द एक्चुअल प्रोसीजर दैट वी हैव डन देयर। और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस, मतलब जो उन्होंने पूछा है लास्ट के सेंटेंस में, उसको हमने मैथमेटिकली फाइंड किया है और वहां पे आंसर लिखा है। सो उसको क्या बोलते हैं, our conclusion. So in this way you can solve the word problems based on the HCF and LCM. So another word problem I kept here, but this is for the homework. Just see this question, homework. So एक क्लू एक देना चाहूंगा फॉर दिस क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें मैक्सिमम नंबर ढूंढना था। यहाँ पे क्या करना है हमें, 3 traffic light change at intervals of 30 seconds, 45 seconds or 60 seconds. After how much time will they all change together again? So यहाँ पे कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा है कि we have to मीन्स उसका डिवीजन करनी है, उसके टुकड़े कहीं भी नहीं करने हैं हमें। सो जब तक टुकड़े नहीं करने होंगे और उससे आगे वाला नंबर ढूंढना है, यू कैन सी हियर हाउ मच टाइम विल दे ऑल चेंज टुगेदर अगेन। सो ये फ्यूचर में जाके होने वाला है। सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, एलसीएम। सो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम कौन सा भी वर्ड प्रेजेंट नहीं है। सो उन 2 वर्ड्स के भरोसे मत बैठो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब जब जिस जिस क्वेश्चन में किसी भी चीज के टुकड़े हो रहे हैं तो हमें क्या ढूंढना है, HCF। मीन्स फैक्टराइज कर रहे हैं हम उससे, डिवाइड कर रहे हैं तो हमें HCF ढूंढना है। और जहां जहां हम आगे वाली चीज ढूंढ रहे हैं, उस नंबर से बड़ी चीज ढूंढ रहे हैं, उस वक्त हमें क्या ढूंढना है, LCM ढूंढना है। So remember these things, and 2 questions I have given for the homework. I hope you will solve this question. All the best.
and you can comment your answer in the comments. I will tell is it correct or wrong. I know that all will solve correctly, those the students or the people who are watching this video. I hope by watching this video तुम्हें HCF और LCM की जो बेसिक कंसेप्ट्स है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वो पता चल गई होगी. एक फॉर्मूला भी है वहां पे, वी कैन लर्न दिस आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, और अभी भी लिख सकते हैं यहाँ पे. सो फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें दो नंबर्स दिए गए, सपोज एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी. सो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. सो कोई भी दो नंबर अगर तुम्हें दिए गए होंगे, उन दो नंबर के अगर तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे और उनके LCM और HCF की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आती है, इक्वल आती है. सो हियर A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. इंटेंशनली मैंने यहाँ पे LCM पहले लिखा है और यहाँ पे HCF पहले लिखा है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आई थिंक इनका आंसर डिफरेंट आएगा क्या, नहीं आता है. Multiplication is a commutative thing, so that's why A multiplied by B और B multiplied by A दोनों भी equally आता है. So this formula is also there. We learn very soon about these things. Based on this formula, some questions will be there. I hope because from this video I wanted to explain the basic idea of the HCF and LCM from the very scratch level or ground level, and I hope I explained this thing in a proper way. So thank you so much and bye.